Okay, so today's our guest is Lala Rukh, and she is gonna talk about. Actually, it's gonna be an informal conversation about. Actually, it's gonna be an informal conversation where she will share her career, maybe lessons from that, and she will try to communicate to the fresh young graduates or fresh graduates, dare I say, what they should be looking for. Okay, it's not going to be a lesson, but it's more going to be off talk where we will discuss the ideas, what to look for, how to think, how to do things, how not to do things. I think it would be waste of time for me to explain what she's going to do and her career, if I was to define it in short, she did her electrical engineering from Mehran University and completed like that's one three bit. So she completed in 2017. She did her first master's from Mehran University, and she did her second master's from uh, was it uh, what university was it? AIT. AIT, Asian Institute of Technology. Yeah, and then she's currently enrolled in a PhD in Ireland, and most of it was like fully funded, or if not fully funded, then funded in some way or other. And she also did go to UK as part of her first master's that was at Mehran University as part of research project. And she also has gone to a couple other countries, which probably I would be missing out right now. But to say the least, she is someone with experience enough to suggest or to talk to young graduates and fresh graduates. So without further ado, to Lala, please carry on, Lala. Hi, Assalamu alaikum everyone. Mohsen, am I audible clearly enough? Like, because I've joined the earphone. Is it Yeah, you're okay? clear enough. You're clear enough. Okay. Um, so I'll like smoothly start because can you see my screen Yeah, now? yeah, Okay. I'll smoothly start because there are a couple of things that need to be clear. पहले में कुछ पहली स्लाइड में दो गाइडलाइंस हैं जो कि मोशन अगर जो कि लेट पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन करते हैं आई वुड बी थैंकफुल टू यू अगर आप वो गाइडलाइंस रिगार्डिंग द वर्कशॉप आप चैट में पुट कर दें या फिर नए पार्टिसिपेंट्स को बता दें क्योंकि शायद मैं रिपीट ना कर पाऊँ बार बार सो आई स्टार्ट सो लाइक जैसे हम देख सकते हैं व्हाट्स नेक्स्ट और जिस तरीके से आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंची होगी अबाउट टुडेज वर्कशॉप आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि ग्रेजुएशन के बाद या फिर लाइक ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे ऑडियंस में सारे लोग फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं हो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो सकते हैं इवन लाइक लेट इन योर कैरियर यू व्हेन यू वांट टू स्विच व्हाट यू आर करंटली डूइंग एंड हमें हमें डिसीजंस लेने वक्त चीज़ों को स्विच करते वक्त स्पेशली कंसीडरिंग जो कि आजकल ग्लोबली हालात चल रहे हैं बिकॉज ऑफ कोर्स लाइक हर किसी को जरूरत है कि एवरीबडी नीड्स टू कीप ऑन मूविंग in their professional journey. So like हमें कुछ tough decisions लेने पड़ते हैं and then like we need the confidence for that. And there are so many opportunities, trust me, that we can change our life. That happened to me and like that happened to a lot of people I know and like my mentors and so on. So as for this workshop और webinar जो भी आप कह लें मेरी ये कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव हो पाए एंड उससे ज़्यादा मेरी कोशिश ये है कि आज आप सब लोगों का जो है जो भी हमारे अटेंडीज है उनका माइंडसेट मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा सा चेंज हो पाए तो इसलिए जो है हम कोशिश करेंगे कि ड्यूरिंग दिस 1 आवर हम इसके बीच में विल टेक पॉजेज एंड गैप्स एंड थिंक अबाउट हम कहाँ पे खड़े हैं हम क्या कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं एंड ऑल दैट तो उसलिए सबसे पहले तो देयर इज जूम पॉलिंग मौसम कैन यू सी इफ यू कुड लॉन्च द पॉलिंग I'm not the host. You are the host, so you will have to do that, Lala. I am making you the host. You're the co-host now, and let's see. I can Um, do it now. या सो दो चीजें हैं सबसे पहले तो पोलिंग है यानी कि आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे विच आर लाइक वेरी बेसिक एंड सिंपल क्वेश्चंस कोई उसमें कोई साइंस यूज नहीं है एंड लाइक यू हैव टू गो एंड vote or reply on these and like we'll do this only now
Initially we wanted to do it along the session, but like अभी आप इसमें अपने answers दे दें. We'll spend 1 minute on doing that, and then like आपको अपनी screen पे ये 1 minute का sign नजर आ रहा है. तो सीन ये है कि जैसे हम आगे जाएंगे सेशन के अंदर, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और ये 1 मिनट का टाइमर स्टार्ट होगा, एंड देन आप ओके. सो फॉर द पोलिंग सबको पोल पे वोट करना है, लेकिन फॉर दिस 1 मिनट थिंग इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप अपना जवाब जो है पोल के अंदर लिखें, मतलब अपना जवाब चैट के अंदर लिखें या फिर हमसे बताएं, अनलेस हमें बताएं, अनलेस आपसे पूछा जाए. आपको सिर्फ जो है अपने माइंड में सोचने हैं उन सवालों के जवाब जब पूछा जाएगा. सो मोहसिन, हम ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 मिनट वेट करेंगे पोलिंग के रिजल्ट्स का, सो दैट वी नो कि हमारी जो ऑडियंस है वो किस एक्सपेक्टेशन से आई है एंड व्हाट दे जस्ट डू थिंक अबाउट जब जो हमने प्लान किया है उसके बारे में. एंड मीनवाइल अगर दूसरे लोग हमें ज्वाइन करते हैं तो इफ यू कुड पुट गाइडलाइंस इन द चैट अबाउट दिस 1 मिनट थिंग. Mohsin, can you also see the poll results on the screen? Yes, I can. And like, can everybody see that? I don't know. I guess no. Only hosts can see that. Okay. Okay, so first question was, how do you think you would be driving your own career? So like maximum response is liberating, which is good. और हम इसी तरीके का response चाहिए था. Expect तो शायद हम नहीं भी कर रहे थे, लेकिन चाहिए यही था. उम्मीद नहीं थी, लेकिन it's there, so it's good, and we will be talking more about that. हमारी कोशिश होगी कि हम उसके इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा emphasis डालें. So the second question was कि what would happen if there are 1+ drivers? Interesting. I'll try to share the poll results as well. I can share the screenshots if you want. Yeah, Hello. can everybody see the poll results as well? Cool. I hope everyone should be able to see the poll results as well. So second question था कि what would happen if there are 1+ drivers? अगर हम सिर्फ एक गाड़ी चला रहे होते हैं and then like 60% of results is 2 is always better than 1. I don't know आप लोगों ने किस हिसाब से सोचा है कि 2 ड्राइवर एक गाड़ी को जब चलाएंगे तो it would be better than 1. It would not be better than 1 अगर दो ड्राइवर्स एक ही गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं. The other options were confusion and clash. क्योंकि imagine कि गाड़ी एक ही ड्राइवर चलाता है, या फिर जैसे ये हम जो है सिंधी में फॉर एग्जांपल कुकिंग के लिए भी कहते हैं कि एक से ज्यादा बावर्ची अगर एक ही खाना बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो खराब ही होता है. तो हमारा कैरियर भी of course will jump into that and we'll talk more. So that was the question about this. And the third question was, what did you expect from today's meeting? Oh, great. So it's a 50-50 response. So some of you came with expectations of me guiding you what you have to do. And then like the rest of you came for an informal conversation. Okay, this is interesting. We'll jump into mountain and beaches scenario. And we have majority of audience from engineering. Okay. So I hope the 1 minute thing is clear. So 1 minute का ये जो timer होगा, I'll ask you questions और ये फिर then you have to like respond or think about it. Sorry. Okay, we can
formally begin. So आपकी जो कैरियर जर्नी है, या फिर आपका, आई वांट टू पिक अ सिंपल वर्ड, कैरियर जर्नी थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही हो रहा है। आपने फॉर एग्जांपल आपने ग्रेजुएशन कर ली, यूनिवर्सिटी से पढ़ लिया, कॉलेज से पढ़ लिया, या फिर मास्टर्स भी कर ली, अब क्या करना है? ये कोई बीमारी नहीं है। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम जिसके बारे में आप सोचें कि अब मुझे क्या करना है, और या फिर आप मेरे पास आए, या फिर किसी किसी भी सीनियर या मेंटर के पास चले जाएं कि गलती से इंजीनियरिंग कर बैठा हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। ये वो वाला सिनेरियो फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं है। एंड लाइक इवन so well, rest one half of the session would be still we'll be talking about the options कि क्या कर सकते हो आपके बैकग्राउंड के बेसिस के ऊपर। लेकिन कोशिश ये है कि हम आप यहाँ से इस सेशन के एक घंटे के बाद आप इतना एम्पावर होके जाएं कि आप अपने फैसले खुद कर पाएं कि आपको क्या करना है। And there are other ways to learn about what you actually want. But the thing is कि जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एम्पावर होना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने पोल रिजल्ट्स में भी देखा कि when we would be able to drive our own journey, it would be liberating and it really feels nice and it feels good जब हम अपने decisions खुद ले पाते हैं। And trust me, जब अगर for example हम अगर कहीं घूमने भी जाते हैं and we make the journey, we are in charge of Google Maps, अगर हम उस जर्नी में गुम भी हो जाते हैं ना, हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा होता है, बाज़ औक़ात हमारे पैसे भी वेस्ट हो रहे होते हैं, लेकिन still we are enjoying the journey because we took that decision। हमने अपनी मर्जी से फैसला लिया था कि हम इंचार्ज होंगे गूगल मैप्स के, और अब हम गुम हुए हैं। एंड लाइक जब आप उस रास्ते पे चल रहे हो तो यू कैन एंजॉय दैट। लेकिन अगर आपको किसी ने फोर्सफुली किसी गाड़ी में बिठा दिया है जिसमें आप ड्राइवर नहीं हो, जिस गाड़ी को आप नहीं चला रहे हो, आई डोंट थिंक सो कि वो जर्नी इंजॉयबल होती है। शायद जिन रास्तों पे आप चलना भी नहीं चाहते हो और कोई आपको पकड़ के वहां पे बिठा दे, ना आपके पास गाड़ी की चाबी है, और वो रास्ते भी मतलब गाड़ी के दरवाजे भी बंद है जिनसे आप निकल भी नहीं सकते हो। सो दिस इज रियली इम्पोर्टेंट कि आप जो है अपने कैरियर चॉइसेस हो गई, या फिर अपने फर्दर स्टडीज की चॉइसेस हो गई, किस फील्ड में पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, कि आर्ट्स में जाना है, म्यूजिक पढ़ना है, जो करना है हम अपनी मर्जी से करें। आई नो देर आर लिमिटेशंस फॉर रिगार्डिंग दैट, जहां से बैठ के आप लोग ये सुन रहे हैं इतना आसान नहीं है, और हर किसी के लिए आसान नहीं होता। लेकिन देन अगेन सोल्यूशंस भी उस हिसाब से बनाने हैं आपको, और वो आपको खुद बनाने हैं, कोई और आपके लिए नहीं बनाएगा। मैंने सवाल पूछा कि व्हाट वुड हैपन इफ देयर वुड बी वन प्लस ड्राइवर्स। वेल मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तो दो लोग मिलके एक गाड़ी को सही तरीके से शायद नहीं चला सकते। मौसम, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? क्योंकि काफी लोगों हमारा मेजोरिटी रिस्पॉन्स ये आया कि टू इज ऑलवेज बेटर देन वन। सो आई थिंक कैन यू रिफ्लेक्ट ऑन दैट? Well, there are exactly two scenarios that I can think of here. One is that main driver would turn right and the other one would decide, okay, I want to go left, and गाड़ी आगे सीधा जो भी होगी उधर जाएगी. Well, the other scenario that I can really think of it here is that, for example, if I'm a learner driver and I'm just learning how to drive, and there's another driver beside me who doesn't have the all controls, but he has the brakes to put on whenever I'm driving rash or I'm doing something wrong. Other driver would be there for my safety. So who is an experienced driver? So both the scenarios are like two different extremes. पहले में एक लेफ्ट जाएगा एक राइट जाएगा और गाड़ी माशाल्लाह से नुकसान ही होगा. Other one is where I have a safety net and I can trust a senior driver or an experienced driver. Those are the two scenarios that I can think of it immediately. And from the poll, like two options, good, like extremely good or extremely bad. That's what I can think. Yeah. Yep, exactly. I forgot the learning वाला part and thanks for reminding me of that. जब तक हम सीख रहे हैं गाड़ी चलाना, तब तक तो हमारे ब्रेक्स अगर किसी और के हाथों में, तो खैर नहीं कह सकते, किसी और के कंट्रोल में है, दैट्स ओके। लेकिन स्टेयरिंग तो फिर भी किसी और के हाथ में नहीं होता। इवन जब हम गाड़ी चलाना सीख रहे होते हैं तब भी सिर्फ ब्रेक्स का कंट्रोल होता है। जब हमने गाड़ी चलाना सीख लिया,
आई एम श्योर तब तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होगा कि इस किस्म जो कि गाड़ी हम इस टाइम स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस किस्म की गाड़ी पे बैठने अगर मैं फुल ड्राइवर हूँ और आगे वाला इवन दो मतलब दो सिस्टम वाली गाड़ी को तो छोड़ दो, आगे वाला बैठ के जो हमें जब सब बता रहा होता है, सिर्फ इवन डायरेक्शन भी बता रहा होता है कि इधर नहीं चलो इधर चलो, एंड लाइक मे बी मोहम्मद अली कैन रिफ्लेक्ट ऑन दैट एज वेल, कि जब हमें दूसरा बंदा बैठ के बता रहा होता है कि क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि भाई गाड़ी मैं चला रही हूँ, आगे मुझे पता है कि कौन सा क्या सिचुएशन है मेरी, मेरे मेरे डिसीजन लेने का रीजन क्या है। मोहम्मद अली, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि कैसा फील होता है जब हमें गाड़ी चलाते वक्त इंस्ट्रक्शंस मिल रहे होते हैं, इफ यू आर ऑनलाइन? इज ही ऑनलाइन मोहसिन? He was among the participants. आई थिंक ही लेफ्ट। वेल इट फील्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग जब हम गाड़ी हम Yes, चला रहे Muhammad हैं। Ali is here. Yeah, can he? Because I would love to listen his reply on that. The question is, if there are two people driving, or if one is driving, another is constantly instructing, what do you think happens? आपको क्या लगता है कि फिर वो किस तरह से फील होती है चीज? It's constantly good. मोहम्मद अली, जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं और आपको कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है तो कैसा लगता है? डिपेंड्स ऑन कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है या कोई बात कर रहा है। जब कोई एग्जैक्टली। इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है तो गुस्सा आता है, जब कोई बात कर रहा होता है तो वो कंफर्टेबल होता है। आपको इस तस्वीर में देख के क्या लग रहा है कि ड्राइवर को क्या फील हो रहा है? ड्राइवर इरिटेट हो रहा है। एग्जैक्टली, थैंक्स अ लॉट मोहम्मद अली। एग्जैक्टली, जब हम अपने हम ग्रेजुएट हो गए, अब हमें डिसाइड करना है कि आई वांट टू डू अ जॉब, मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, मुझे कमीशन करनी है, मुझे आगे पढ़ना है, और अब उस ड्राइविंग सीट पे मैंने गाड़ी चलाना भी सीख ली है, एंड लाइक नाउ समबडी एल्स इज टेलिंग मी व्हाट टू डू, इट गेट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग। बट शायद थोड़ा मसला ये भी है कि हम अगले बंदे को परमिशन देते हैं कि वो हमें बताए, और हम कॉन्स्टेंटली हमें हमें फिर जिम्मेदारी लेने का भी तो थोड़ा मसला होता है ना, कि हम कहते हैं कि अगर मैं अपनी करियर की जिम्मेदारी ले लूं, मैं सोच लूं कि मैंने ये करना है, फिर मैं फेल हो गया, मेरे आइल्स में 40,000 लेके मेरे 5 बैंड आ गए, फिर तो इल्जाम मेरे ऊपर आएगा। व्हाई नॉट जस्ट फॉलो जो अब्बा कहते हैं वही करता हूँ, फिर फेल भी हो गया तो फिर अब्बा के ऊपर ही आएगा, मेरे ऊपर नहीं आएगा। इन चीजों से निकलना है, बिकॉज बहुत कुछ है करने को, और एक जिंदगी बहुत कम है पूरी दुनिया को देखने के लिए, या फिर इवन जो वो सब कुछ करने के लिए जो आप रियली में एक्चुअली में करना चाहते हो। तो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद भी बैठ के दूसरे को अथॉरिटी दोगे तो आप जस्ट अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना भी खराब कर रहे हो और दूसरों का भी। It's your journey, it's your alone talking about your career, your professional journey, आपकी higher education, ये सिर्फ आपकी जर्नी है। ये इसमें कोई इसमें इसमें ना आपके साथ आई टॉक अबाउट कि आपके साथ लोग चलेंगे, लेकिन इसको ड्राइव आपको करना है, इसको चलाना आपका, डायरेक्शन आपकी मर्जी है, ब्रेक लेना आपकी मर्जी है। आपको किसी और को अथॉरिटी नहीं देनी है कि दे शुड टेल यू कि व्हाट एंड व्हाट नॉट। आई एम नॉट श्योर कि लाइक हमारे ऑडियंस ने ये ड्रामा देखा होगा कि नहीं, लेकिन दिस वाज अ ड्रामा। संदीप भैया जो कि सीएसएस टाइप ऑफ एग्जाम की इंडिया में तैयारी कर रहा होता है, I'll just quickly give you the context, क्योंकि उसमें उसके अंदर ये जो डायलॉग्स थे दे आर लाइक किलिंग। सो सिचुएशन ये होती है कि वो बंदा कुछ मतलब जिस तरीके से सीएसएस होता है पाकिस्तान में, उस किस्म के एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, एंड देन वो फेल हो जाता है, एंड देन उसका अब्बा आके उसको कहता है कि तुम्हारा तुम्हारा सपना फेल हो गया, तुम्हारे सपने का फेल हो गया। एंड देन वो बंदा बेचारा, उसके दिमाग पे से क्वेश्चन मार्क बन जाते कि मेरा सपना, लाइक मतलब फॉर एग्जांपल आप इसी सिचुएशन को हम थोड़ा पाकिस्तान में फील करते हैं ना, कि बंदा सीएसएस में फेल होके आके फिर अब्बा उसको कहते हैं कि तुम्हारा सपना फेल हो गया। आई मीन कम ऑन, जब वो सीएसएस का सपना हम देख रहे होते हैं, लाइक दिस इज सीएसएस इन जस्ट एग्जांपल, कोई भी आपका सपना हो सकता है कि बी दैट हायर एजुकेशन, एंग्रो में जॉब मिलना आपका सपना हो सकता है, कि कैनअप में जॉब होना, लेकिन वो सब सपना हम सब फैमिली वाले साथ मिलके देख रहे होते हैं। जब सच्चा हो जाता है ना, तब तो सारे खानदान का सपना बन जाता है, तब तो सारे आ जाते हैं, मिठाई खाने भी आ जाते हैं, कहते हैं मेरा बेटा मेरी बेटी ये एंड वो। लेकिन जब आप फेल होते हो ना, देन यू आर अलोन देयर,
तब उस वक्त आपके साथ कोई नहीं होता. So keep in mind, this is your journey. जब आप कामयाब हो जाओगे, उसमें 4 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं, कोई मसला नहीं है. सारे लोग आ जाएंगे. जो लोग अभी आपको मॉक करेंगे, जो लोग अभी आपको छोड़ के जाएंगे, यही सारे लोग वापस आ जाएंगे. लोगों आप आई एम इवन लाइक स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट फैमिली मेंबर्स, क्योंकि वही लोग हमें प्रेशर करते हैं कि हम गलत डिसीजंस लेते हैं जिनके बेसिस पे. Like आपके negative remarks and all that, I'll take that in the comments and at the end, but I'm just trying to talk ground reality. So I'll give you 1 minute here to just think about, सिर्फ इस बारे में सोचना है कि हम जो इस वक्त कर रहे हैं, like whatever हमारे ऑडियंस में इस वक्त 16 participants हैं, even most in you and like everyone, आप जो अभी कर रहे हो इस वक्त, जिस मोमेंट में हो, लाइक नॉट इन द मोमेंट, जिस भी करियर जर्नी में हो, आप मास्टर्स कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, क्या ये आपका अपना सपना है या फिर किसी और का सपना है? I'll start the timer and give you 1 minute to reflect on that. If somebody puts their comments in the chat, I mean, we can use that and we can talk about it. लेकिन जवाब देना जरूरी नहीं है, सिर्फ इस 1 मिनट को यूज करना है इस बारे में सोचने के लिए कि जो इस वक्त आप कर रहे हो, ये आपका सपना है या किसी और का सपना. एंड okay, so like thank you for your comments, and like we'll Mohsen, can you take note of the comments and especially Marek's comment on disagreeing? I'll come to that at the end. Maybe I think we're like really behind the time, and I'm glad कि majority of the audience wrote कि ये आपका अपना सपना है. शायद आप लिख पाए हो, इसका रीजन भी यही था कि ये आपका अपना सपना था. शायद जो लोग नहीं लिख पाए हैं, उनका रीजन यही होगा कि हो सकता है, आई कैन नॉट जज, कि वो उनका अपना सपना ना हो. लेकिन ये हमारे सोसाइटी की ग्राउंड रियलिटी है, एंड लाइक इट्स गुड अगर ये आपका सपना है तो. Well then, like we had some comments on Naseeb and Kudrat. Well, like I am not capable enough to talk on that. So मकसद यही है कि you have to take charge of your journey. Options decide करने से पहले हम we talked enough कि you should be in charge of your journey, taking your decisions. मैं सिर्फ आपको वही गाइड कर पाऊंगी जो कि मुझे पता है ना, उससे ज्यादा तो मैं आपको गाइड भी नहीं कर सकती. We'll do this another 1 minute thing, and then we will be talking. You have to think about what's holding you behind. For example, अगर जो लोग वो नहीं कर पा रहे हैं या फिर काफी अरसे तक वो नहीं कर पा रहे थे जो वो करना चाहते थे, तो क्या हमारी limitations थी जो कि हमें मना कर रही थी, या फिर हमें they were holding us back from like taking the right decision or doing what we want to do. And the time starts now, just to think about
the limitations. I'll try to go through a couple of comments quickly, and then we'll sort the comments and all at the end. So some of us say family. So certainly, जब पहला वाला poll था, it was true. Financial constraints plus society, agree. Peer pressure, of course. Confusion, the fear of failure, lack of proper guidance, family, and long-term stability. All of these are true. हर किसी के situation में they can vary as well, और किसी के situation में ये multiple भी हो सकती हैं. लेकिन the thing is कि जो rest of the part है हमारे आज के session का, maybe it goes beyond 1 hour, I think. It is essentially about the options, लेकिन the thing is कि आपको किसी भी रास्ते पे, नए रास्ते पे जाने से पहले we have to clear of these confusions, pressures, and like we have to understand कि इनसे निकलने के बगैर हम कितने भी टॉक्स सुन लें, कितने भी हम डिसीजन मेकिंग कर लें, कुछ भी कर लें, रिजल्ट्स शायद हमें ना मिल पाए. तो कोशिश हमें ये करनी है कि हमें इन लिमिटेशंस के ऊपर भी काम करना है. अगर फैमिली इज द प्रॉब्लम, वी कैन मे बी सिट एंड टॉक टू देम. इफ पीयर प्रेशर इज द प्रॉब्लम, मे बी वी कैन हम उसके बारे में सोचें कि वाई, लाइक क्या ये इतना जरूरी भी है कि नहीं. लेकिन पहले इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि हम मसले को समझें भी कि जो चीज़ हमें रोक रही है, एंड देन उससे हम आज़ादी पाएं, सो दैट हम आगे एक्चुअली कुछ अचीव भी कर पाएं. देन अगेन, यस, जो भी हमें रोक रहा है उस ब्रेक को जो है रिलीज करना है, देन वी हैव टू कम आउट फ्रॉम दैट. एंड देन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड ब्रेक. It's healthy to take good breaks. I mean, if you graduated and, like, for example, especially in case of women, if you took a break for a year or so and you spent, like, or even men, you spend some time with your family, या फिर आपने किसी भी personal reasons की वजह से, like you had कोई मजबूरी हो जाती है, उसकी वजह से आपने ब्रेक लिया, it's okay, it's completely okay. मैं जिस जगह पे बैठी हूँ वहां से बैठ के मैं आपको बताती हूँ, लोग यहाँ रिटायरमेंट के बाद भी पीएचडी करने आते हैं. हमने पाकिस्तान में इतना हलवा बनाया होता है कि भाई मेरी तो उम्र निकल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. ऐसा कुछ नहीं होता. ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. सुधरे हुए मुल्कों में ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई 1 साल वेस्ट हो गया तो क्या हो गया. कुछ टाइम पहले तक मैं भी यही सवाल पूछती थी कि सीवी में गैप आ जाएगा. लेकिन दुनिया में ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पे वो आपसे ये पूछते हैं कि इफ यू टुक अ ब्रेक, वाज इट फॉर अ फैमिली? And then if you say yes, like even on my own supervisor told me that after PhD, उसने कोई 9-10 हजार यूरो जमा की, and then he left out to travel the world for 1 whole year. I mean, आप पाकिस्तान में किसी को बताओ कि भाई मैंने कोई 30 लाख जमा करके एंड मैं दुनिया घूमने चले गए, तो क्या पागल हो गए हो? 30 लाख जमा करके तुम घूमने निकल गए थे, वो भी 1 साल सीवी में गैप आ गया. So things work out bit differently in developed world. Or well, like maybe some of you not agree with me, लेकिन शायद कहीं ना कहीं हम भी डेवलप होने की कोशिश कर रहे हैं, सुधरने की कोशिश कर रहे हैं. So like we just trying to maybe follow the good things, and it's okay. क्योंकि हम इस वक्त थोड़ा कैरियर और जर्नी को गाड़ी चलाने के हिसाब से शायद देख रहे हैं, तो like I'll just use some more analogies and then think about कि
And I'll give you 1 minute to just reflect on. मैं अब timer भी start कर देती हूँ, and meanwhile you can also think about कि आप जिस journey पे हो, क्या उसमें आपने फॉर एग्जांपल आप किसी जर्नी पे चढ़ भी पड़े हो, मास्टर्स से स्टार्ट भी कर लिया है पाकिस्तान में, एंड देन स्टिल आर यू थिंकिंग कि मेरे भागने के रास्ते तो निकले हो, मतलब खुले रहने चाहिए, यहाँ से बस मुझे कोई भी escape रूट मिल जाए और मैं भाग जाऊंगा. यहाँ पर जो भी आप कर रहे हो, जिस जगह पे भी, जिस पोजीशन पे भी हो, आर यू हैप्पी इनफ, आर यू कॉन्फिडेंट इनफ, लाइक आर यू फाइन इनफ, आप मेंटली सही भी हो कि नहीं, कुछ आप ऐसा तो नहीं कर रहे हो अपने जर्नी के साथ, क्योंकि लाइक ऑफ कोर्स स्पेशली आफ्टर ग्रेजुएशन आपके आई डोंट वांट टू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर, लेकिन शायद जिस लाइक टाइम शायद वो इतना इम्पोर्टेंट ना भी हो, लेकिन आप जो फील्ड चूज करते हो वो जरूर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि ग्रेजुएशन करते वक्त आपने खुद डिसीजन ना लिया हो कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग करना है या इलेक्ट्रिकल, मे बी यू वर ड्रिवन बाय सम अदर फोर्सेस, लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन you should be capable enough to again take charge of your journey and make decision. So like now you should be comfortable enough जहाँ पे भी आप बैठे हो. उसके बाद safety क्या है, like आगे insurance उसकी क्या है, and then SOP. So like SOP is the term like statement of purpose जो कि आपने commonly if you have applied वो हमारी like scholarship applications में use होता है, जिसका मकसद ये होता है कि we have to link past, present and future. जो आपका background था, अभी जो आप कर रहे हो और जो आपके goals हैं, वो सारे एक दूसरे से align होना चाहिए. I'm pushing you forward to do whatever you want to do and whatever like you would love to do. लेकिन I mean थोड़ा सा link भी होना चाहिए, and like you should have हमारे कोई reasons भी होने चाहिए ना, कि मैं अगर engineering के बाद law करना चाह रही हूँ तो उसका reason क्या है, उसका कोई connection होना चाहिए, so that आगे वालों को, दुनिया को भी कुछ फायदा होना चाहिए. सब कुछ अपनी जर्नी, अपने फायदे और सब कुछ पैसे के लिए नहीं होता. And then हर रास्ते के लिए एक अलग तैयारी चाहिए होती है, और उसके लिए एक अलग सामान चाहिए होता है, अलग स्किल्स चाहिए होते हैं, और हम एक वक्त में दो जगहों पे ना तो हो सकते हैं, और ना ही हमसे ये एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि हम एक ही वक्त में माउंटेन्स पे भी हों और एक ही वक्त पे बीचेस पे भी हों. लाइक अगेन देयर आर प्लेसेस जहाँ पे आपको ये कॉम्बिनेशन भी मिल सकता है, लेकिन इन अ ब्रॉडर सेंस अगर हम फॉर एग्जांपल माउंटेन्स पे जाने की तैयारी करते हैं तो हमें अलग किस्म के शूज चाहिए, अलग किस्म के लाइक बैग अलग किस्म का चाहिए, क्योंकि आपने वो तैयारी करनी है जो कि आपको वहां पे मदद कर पाए उस सफर में. अगर आप बीच पे जा रहे हो तो आपको अलग 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 किस्म की चीजें चाहिए होती हैं. इवन अगर हम जो कैमरा लेके जाते हैं वो भी, अगर मतलब चलो एक मोबाइल से आप सारी तस्वीरें ले सकते हो, लेकिन आपको अगर अच्छी क्वालिटी की तस्वीरें चाहिए तो आपने बीच के लिए अलग किस्म का लेंस लेके जाना है, और माउंटेन्स पे हाइकिंग के लिए अलग किस्म का लेंस लेके जाना है. चल तो आप उस चप्पल के साथ भी आप माउंटेन्स पे भी जा सकते हो, लाइक आपको कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन यू नो कि उसके बाद क्या होगा. तो सिमिलरली हमारा स्किल सेट, हर बंदे का इंटरेस्ट सेट, स्किल सेट अलग होता है. हम सेम किस्म के स्किल्स लेके कैसे, हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमारा स्किल जो भी था, हमने ABC सीखा, अब हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम XYZ कर लें. इस तरीके से नहीं होता. और अगर इस तरीके से होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं माउंटेन से आज वापस आई हूँ और मुझे कल बीच के लिए जाना है, तो मैं पहले ग्रोसरी स्टोर जाऊंगी और वो चीजें लूंगी जो मुझे बीच या फिर अपने घर पे अगर पड़ी हैं. आई पैक दैट स्टफ जो कि मुझे बीच पे जाने के लिए चाहिए. आके मैं वापस आके वही थैला उठा के नहीं जा सकती. सो सिमिलरली हमें उस तरीके की तैयारी करनी है. Now starts the part 2 of the workshop, and we'll quickly like I've categorized into 3 broad categories. Like इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं दुनिया में बहुत करने के लिए, लेकिन like based on my understanding, सबसे पहले तो सिविल सर्विसेज, बी दैट आपका CSS हो गया, या फिर आपकी फील्ड से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल यू डिड इंजीनियरिंग और आपके फील्ड से रिलेटेड कोई जॉब गई, उसमें टीचिंग आ गई. And then job in your field, for example you did engineering or medicine and now you want to continue, so उसमें I'll try to, मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं आपको develop world और abroad की situation बताऊँ कि किस तरीके से करना है, and then finally continuing your education. अब इस हर रास्ते
पे जाने के लिए अलग किस्म की लिमिटेशंस होंगी, अलग किस्म के मसले मसाइल आएंगे, लेकिन हमने पहले ही तैयारी कर ली है, ठीक है, एंड वी अग्रीड अपॉन के अलग किस्म की तैयारी करके जाना, एंड देन हम उसके बाद इस रास्ते पे आने की कोशिश कर रहे हैं. अब एंड देन देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन फॉर यू टर्न. हम फॉर एग्जांपल किसी रास्ते पे आ गए हैं, हमें मजा नहीं आ रहा, we can always come back and change our journey, and it is okay to do that. उसमें कोई बड़ा मसला नहीं है, टाइम भी वेस्ट हो गया तो कोई मसला नहीं है. Well, there is another option, startups का, and I refer it as flying, क्योंकि अभी तक हम गाड़ी चलाने की बात कर रहे थे, but startup is of course something really huge. लेकिन अगेन इसमें भी यही बात आती है कि आपने टेस्ट आपने ड्राइविंग के लिए दिया था और अब आप उड़ाना जहाज चाहते हो, तो ये तो नहीं हो पाएगा. अगर आपने जहाज उड़ाना है तो पहले आपने पायलट लाइसेंस चाहिए होगा. So this is something huge. Businesses and startups should not be only for the sake of doing it. अगर आप वाकई में फील करते हो कि मेरे पास वो स्किल सेट है, या फिर आपके पास इतने ज्यादा like you have the capital to start the business, या फिर आप किसी सोशल कॉज के लिए कुछ करना चाहते हो, that's a different scenario. If you think you have that thing in yourself to start and start up, but like ऐसे ही आपके दोस्त का दुकान है तो आप अपनी दुकान लगा कर बैठ जाओ, या फिर बस, क्योंकि मोर ऑफन हमारी सोसाइटी में ये बहुत कॉमन होता है. दिस डजंट वर्क आउट, क्योंकि अगेन बेस्ड ऑन द सेम थ्योरी, सेम स्किल सेट एंड ऑल दैट, वी नीड डिफरेंट स्किल्स. सो डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू. सबसे पहले तो जर्नी वही स्टार्ट करो जिस पे आप जाना चाहते हो. इन द पोल यू मोस्ट ऑफ पीपल सेड वी लव माउंटेन्स, तो आप बीच, मतलब लाइक इट्स अ डिफरेंट थिंग. लाइक इफ यू डोंट लाइक वाटर, तो आप उस रास्ते पे नहीं जाओगे. आई विल स्टार्ट 1 minute and let you think about, are you doing what you love, and are you loving what you're doing? All right, I didn't see any new messages coming in the chat. Maybe we can talk more in the end. So सबसे पहला ऑप्शन है सिविल सर्विसेज का. Well, maybe I'm not the right person to talk more about it. लेकिन I promise CSs or civil services और आपकी अपनी जॉब में कमीशन हो, वो किसी भी ग्रेड की हो, and government jobs and everything, they are amazing and they are like whatever you have heard about it. जो भी जिसने भी आपको बताया होगा शायद सही हो. लेकिन अगर आप सिविल सर्विसेज में गलत इंटेंशन से आ गए हो, आपके रीजंस गलत हैं, सिर्फ आपको लाल ब्लू जो है बत्ती के लिए टीरी लेने के लिए आ गए हो, तो लाइक यू आर इन इट फॉर रॉन्ग रीजंस. एंड इफ यू आर इन इट फॉर रॉन्ग रीजंस, then these all apply on you. Like if you are one of those, आप अपने साथ cheating कर रहे हो, and like you should not even be thinking about it, like अगर आपके reasons सही नहीं है. And moreover, खैर इसमें मेरी expertise नहीं है, so like I won't talk more about it. So the second option was jobs after graduation. So like I'll put more emphasis on it, at least like of course आप सब भी इस बात से अभी तक acknowledge करते होंगे कि डिग्री से तो काम चलने वाला नहीं है. We need more and more skill set. हमें अपने like पहले तो जब for example जब मैं पढ़ा करती थी आज से 10 साल पहले यूनिवर्सिटी के अंदर, हमें ये बताया जाता था कि इंटरपर्सनल स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये हो गया, वो हो गया, इंग्लिश हो गई. वेल दे आर ऑल स्टिल वैलिड, लेकिन अब जो है स्किल्स का मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एंड लाइक वी हैव टू हैव स्किल्स.
to to land at any job, and of course there's competition as well. This session is not about guiding you कि skill grooming किस तरीके से करनी है, लेकिन just to guide you कि अगर आप jobs वाला path decide करते हो, आपको ये बात एक समझनी होगी, अगर आप अब तक नहीं समझ पाए हो कि skills बहुत जरूरी हैं, उसके बगैर काम नहीं होने वाला. So broadly, अगर आप पाकिस्तान में if you are in your final year, और अगर आप या फिर आप fresh graduate हो और आप पाकिस्तान में job है, आपका plan है या फिर आपका वही ambition है, तो आपको शुरू से तैयारी रखनी है अपनी, and then you don't have to think about anything else. बाकी सब चीजों को छोड़ देना, job का मतलब this is non-government jobs or आपकी private companies हो गई and all that. आपको दूसरे options के बारे में नहीं सोचना. अब for example आप job की तैयारी कर रहे हो, test की तैयारी कर रहे हो, and then you say चलो बैठा हूँ तो masters में admission लेता हूँ. Please no. आप उसी चीज में जाओ जो कि आपको actually करनी है. आप उस चीज को अपना 100% दो, and then once you are clear कि मुझे यही करना है, and then further उसमें आपको अपनी skill grooming के लिए masters करनी है या जो भी करना है, then do it in that direction. बाकी बैठा हूँ कर लेता हूँ, HEC की फीस मिल रही है तो कर लेता हूँ, those are all wrong reasons, और आप अपने साथ गलत कर रहे हो ना कि किसी और के साथ. There's no problem in being ambitious. आप बड़े सपने भी देख सकते हो, it's completely okay. जब आप देखोगे तभी उनको आप सच कर पाओगे शायद. Then the other option is आप अगर शुरू से ही पाकिस्तान से बाहर jobs देखना चाहते हो, then there are two different ways. Academic jobs at in abroad out of Pakistan, and then non-academic jobs. अब इनमें थोड़ा सा difference है, and maybe this would be really really helpful information and new information for you all. So I have these categories, and then I would tell you the difference between academic and non-academic jobs. अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर आना चाहते हो एज अ रिसर्च असिस्टेंट हो गया, एज अ लैब असिस्टेंट हो गया, या फिर एनी काइंड ऑफ जॉब इन यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान से बाहर, इट्स रियली इजी टू गेट द जॉब्स, एंड इवन आपके ये रिक्वायर्ड नहीं कि आपकी कोई पीएचडी हो या फिर आपकी मास्टर्स हो उसके बाद ही आपको जॉब मिल पाएगी. अगेन अगर आपके पास सफिशिएंट स्किल सेट है तो आप यूनिवर्सिटीज के अंदर जॉब इजीली लैंड कर सकते हो. जबकि नॉन अकेडमिक जॉब्स यानी कि बाहर की जो इंडस्ट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल जो भी आपका फील्ड है, उससे रिलेटेड बहुत मुश्किल होता है डायरेक्टली उस जॉब को गेन करना. एंड इवन वंस यू गेट द जॉब, यूनिवर्सिटीज के अंदर वीजा सिचुएशन थोड़ी आसान होती है क्योंकि यूनिवर्सिटीज मेनली गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उनका वीजा इशू नहीं होता, मतलब वीजा के मसले नहीं होते. लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में जा रहे हो तो थोड़ा मसला होता है. लेकिन अगेन there is one edge in this कि अगर आपको वो critical skill employment है, यानी कि आपके पास वो skills हैं जो कि उस country को required हैं, then you easily get the visa. लेकिन it's not always the case, it takes some time and so on. With respect to salary in universities, अगर आप as a research assistant, I'll just maybe only refer to research assistant job because that's really common. It's medium. From medium I mean कि जो normal students हैं उनकी stipend से ज़्यादा होगी आपकी salary, लेकिन still it will be much less than the industry. Social benefits again in university low and in industry is really high. अगर आप यूनिवर्सिटी में हो एज अ रिसर्च असिस्टेंट या फिर लैब असिस्टेंट, तो आपके फर्दर एजुकेशन के रास्ते आसान बन जाते हैं. फॉर एग्जांपल you came to Ireland looking for like as a research assistant, but you still want to do a PhD. बहुत आसान है आपकी, क्योंकि आप ऑलरेडी सुपरवाइजर प्रोफेसर्स के साथ टच में हो, आप उस कंट्री को जानते हो, एंड लाइक यू नो कि यहाँ पे चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एंड देन मे बी यू वुड बी एबल टू डू अ बेटर हायर एजुकेशन. मतलब आप अपनी फील्ड मजे की चूज कर सकते हो. Whereas अगर आप अकेडमिया में हो तो हायर एजुकेशन बिकम्स एन चॉइस, लाइक इट्स अप टू यू अगर आप आगे पढ़ना चाहते हो नहीं चाहते हो. ऑप्शंस फॉर नॉन अकेडमिक जॉब्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड देन इवन इफ यू आर इन यूनिवर्सिटी तब भी आप जो है इंडस्ट्री के लिए जॉब के लिए स्विच बड़ी आसानी के साथ कर सकते हो. सो आई नो अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो कि यूनिवर्सिटीज में आते हैं फ्रॉम पाकिस्तान एज अ रिसर्च असिस्टेंट, एंड देन कुछ महीनों के बाद या फिर 1-8 साल के बाद दे मूव टू द इंडस्ट्री, क्योंकि अब आपका जो पहले वाले मसले थे, जो पहली वाली लिमिटेशंस थी, वीजा सिचुएशन, वो खत्म हो गई है.
कंट्री में आने वाली जो लिमिटेशन थी वो खत्म हो गई है. वंस आप कंट्री में आ जाओ, फॉर एग्जांपल इन माय ओन कंट्री वेयर आई लिव इन आयरलैंड, it's comparatively really easy to make your way as a research assistant here. यहाँ पे masters पे on scholarship if there is a scholarship, and then once you finish and you get the good one visa, like after graduation wala visa, and then you can easily switch. And then finally it depends upon what you love to do. For example, I would prefer studying and maybe keep on studying and researching, well, research, rather than being directly in the industry. So like I would choose to be in the university because like they do what I want to do. And then that's it. So like we are still in the job categories, and I have put PhD here because I want to really break the stereotypes regarding PhD. And like after this, we'll talk about higher education. So like PhD, with my perspective, it's somewhere in between higher education and jobs. So PhD से मुतालिक लोगों को समझते हैं कि भाई हमें तो नर्ड होना चाहिए, हमें तो ग्लासेस पहने होने चाहिए तभी मैं PhD कर पाऊंगा, मुझसे इतना पढ़ा नहीं जाता, मैं कोई होशियार नहीं हूँ, मेरी GPA ये है वो है. That's all not true. Like it's 2023. हम and like it's our generation जो कि we know how to do things easily and we know how to do things smartly. अगर आप कहते हो कि I'm a nature of like a person who love to do a 9 to 5 job, you can do a PhD with respect to 9 to 5 job. And in fact, हमारे supervisors और developed world में mostly professors आपको कहते हैं कि take your PhD as a 9 to 5 job. आप weekdays पे काम करो, दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे अपनी research पे काम कर रहे हो, that's enough. Take your weekends off, have the work-life balance. कोई जरूरत नहीं है आपको Saturday Sunday पे काम करने की. Moreover, they are giving you money at the end of every month to do a work which you're doing for them. जो भी आप PhD का प्रोजेक्ट खत्म करके दोगे at the end, उसमें से जो publications होंगी वो यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर्स की भी होंगी, for example. So like ultimately you're doing the work for them. बाकी जो आपकी पर्सनल ग्रूमिंग हो रही है, आपको एंड में कागज मिल रहा है डिग्री का, आपको ट्रैवल करने का मौका मिल रहा है and all that, those are added on benefits, but you can take PhD as a job pretty much. And even in that context, I would say कि अब तो डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद भी आप PhD कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप मास्टर्स करें. लेकिन खैर उसमें यही है कि PhD is well, I don't want to make it difficult for you, but it's a long-term commitment. For example, job आप करते हो तो उसमें 1 साल का contract होता है, PhD 4 साल का contract होता है. Once you're in this thing, you are in it. And if you think कि आप 4 साल का commitment कर सकते हो, then welcome. And finally, higher education options. आप क्या आप कहाँ पे मास्टर्स कर रहे हो या फिर कहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन हो रही है आपकी और कब हो रही है, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. लेकिन किस फील्ड में कर रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट. उसका बहुत फर्क पड़ता है. किसी भी रास्ते पे निकलने से पहले वी हैव टू चेक द रास्ता देखना है, वहाँ पे कितना कंपटीशन है ये देखना है. फॉर एग्जांपल मैं किस किस्म की मास्टर्स करना चाहती हूँ, उसमें कितना टाइम लगता है, हमें सारी चीजें एनालाइज करनी है एंड देन उसी के हिसाब से हमें रास्ते पे निकलना होगा. और अगर फॉर एग्जांपल रास्ते में बारिश भी होनी है तो हमें घर से प्रिपेयर्ड निकलना होगा सो दैट हमारे पास अम्ब्रेला हो जब हम रास्ते से निकलें. सो सिमिलरली जो भी आप फर्दर एजुकेशन के लिए चूज करते हो, यू शुड बी प्रिपेयर्ड इनफ पहले से. एंड देन अगेन फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स, अगर आप पाकिस्तान में करना चाहते हो to do what you love. उस फील्ड में करो जो कि आप genuinely करना चाहते हो. It's like, and there are so many options. It's just not कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स करो. मी पर्सनली मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स करने के बाद I did my master's in plastics, which is completely out of the box, but I linked it somehow, and I mean मैं अभी भी आपको 1 मिनट के अंदर लिंक करके बता सकती हूँ कि किस तरीके से प्लास्टिक रिसाइकल होती है and then हम उससे बिजली बना सकते हैं. And then now I'm doing my PhD in energy in buildings.
it's not always important कि हम चीजों को आपका कोई बिल्कुल ठोस बैकग्राउंड हो, लेकिन जब तक आप लिंक बनाना चाहते हो, जब तक आपका इंटरेस्ट है, जब तक आपकी स्किल सेट आपका साथ दे रहे हैं, इट्स ओके। सो सिमिलरली अगर मैं पाकिस्तान में भी होती तो मैं वही करती जो मैं जनरली करना चाहती हूँ। सो आपको फैसला जो है वो सोच समझ के करना है। पाकिस्तान में करने से आपका टाइम बच सकता है, एंड क्योंकि आपको जो वेट पीरियड होता है बीच में, यू डोंट नीड टू गो थ्रू दैट। एंड मीनवाइल आप अपनी स्किल्स ग्रूम कर सकते हो, आप अपना प्रोफाइल बना सकते हो, यू कैन डू द रिसर्च एंड यू कैन डू वर्क ऑन योर राइटिंग स्किल्स। एज कम्पेयर टू दैट, अगर आप पाकिस्तान के बाहर मास्टर्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इनपुट इन टर्म्स ऑफ आपको टाइम चाहिए, पैसे चाहिए, एनर्जी चाहिए, एंड देन सब्र चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है और फेल्यूर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। एंड इट्स वेरी मच इट्स प्रीटी मच लाइक आप जब 100 जगहों पे अप्लाई करोगे, देन कोई 20 जगह पे आप शॉर्टलिस्ट होंगे, उनमें से 2 जगह पे आपको इंटरव्यू कॉल आएगी, एंड देन यू विल फाइनली टेक अप समथिंग। एंड लाइक व्हेन आई से 100, आई रियली मीन 100। मैंने सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखा। I did maybe like when I was trying, I was trying for PhD during the COVID times, which was maybe the worst time to be looking for the opportunities. But then things work out in this way. Well, in terms of field, like again, there's so much more than what you can do potentially. आपका भले जो भी background हो, आप engineering से हो, medicine से हो, then post graduation is a really good opportunity and really good time to decide कि अब आपको क्या करना है। आप चीज़ों को इस तरीके से लिंक करें कि अब जो आपने बैचलर्स की वो आगे उसकी एप्लीकेशन हो, and then you can put in chat now maybe so that at the end we take up your questions. कि फॉर एग्जाम्पल आप जो है आपने जो भी जिस भी फील्ड में बैचलर्स किया है वो लिखें, एंड देन इन ब्रैकेट कैन यू प्लीज राइट आगे आप क्या करना चाहते हैं। मे बी लाइक if it changed after this session, or like maybe initially there was something in your mind. For example, मैंने आप नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, for example I did electrical and then bracket में मैंने डाला है plastics. It means कि मैंने electrical किया bachelor's में and then did the master's in plastics. So can you all if you want, if you can put in chat, or then maybe at the end you can put it in your questions. Then finally, unconventional education. So like अभी तक जो भी हमने बात की ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करने की, या फिर जॉब करने की, या फिर सिविल सर्विसेज करने की. We pretty much know about all of these things. Those are very common. Lekin with internet and like especially in the era we are living, we have so many more opportunities that we can take up, and like उनमें से ज़्यादातर तो free of cost भी होती हैं. और यहाँ पे even अगर आपको certificate free of cost नहीं मिल रहा, like even if you just get the skill, maybe that's enough. In developed world, diploma or short certificates or professional certificates, even ना सिर्फ online लेकिन in person भी चीजें होती हैं. For example, even in Pakistan हमारा training programs होते हैं, NAFTEC and Benazir support and all that, जिसमें for example आपको solar का लगाने का installation सिखाते हैं whatever. क्योंकि आपने यूनिवर्सिटी में भले ग्रेजुएशन किया, यहाँ पे जिन लोगों ने नहीं भी किया, they need this skill. So this is like kind of skill based आपकी skill grooming. You need this skill now, और आगे for example maybe आपको वो job के लिए या फिर masters के लिए उस चीज की जरूरत होगी. So we can do our grooming through so many other unconventional options as well. And then I have added this 1+ masters in it as well. For example, you did 1 masters and you think that आपको किसी और भी field में masters करने की जरूरत है before jumping on to a job or before jumping to a PhD. It's completely okay to do that. Because we are talking about higher education and then like abroad was one of the options, I would just like, maybe this is new information like to you all कि हर scholarship मुश्किल नहीं होती apply करना. And like हर scholarship के लिए आपको GRE, IELTS और TOEFL का burden उठाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको ये जरूरत है कि आप competition से जाओ. आपको थोड़ा स्मार्टली काम करना है. आप सिर्फ जो है ना सही मेंटर्स के पास से आपको गाइडलाइन चाहिए
and there are so many things जो कि हम आसानी से कर सकते हैं, and like I know like आजकल मतलब even you know recruiters को भी कोई जरूरत नहीं है कि आपके लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स आपसे लें, like there are majority of countries जहाँ पे अब सिर्फ आपसे एक one page आपका ऐसे मांगते हैं, one page CV मांगते हैं आपसे, and then they decide कि आपको सेकंड राउंड में लेना है कि नहीं लेना। तो आपको सिर्फ उन जगह उन अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है कि कहाँ पे है ऐसी अपॉर्चुनिटीज जिन जगहों पे अप्लाई करना भी आसान है। फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ वुमेन, आई नो अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जिनके जो कि बहुत बिजी हैं अपनी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में भी, जिनके लिए बहुत मुश्किल होता है इतना टाइम निकाल पाना कि वो जीआरई के भी मैनेज करें, आइल्स को भी देखें, अपनी फैमिली को भी देख रही हैं, या फिर अगर प्रोफेशनली ऑलरेडी दे आर इन अ जॉब और समथिंग। So like again for them a message as well कि बहुत सारी other opportunities हैं, and then it's really important to do the quick reality check। हम हमें अपनी काबिलियत का पता होता है, हमें अपनी स्किल्स का पता होता है, लेकिन फिर भी जो है हम ओवर एम्बिशियस हो रहे होते हैं। आई नो एट द बिगनिंग आई सेड इट्स ओके टू बी ओवर एम्बिशियस, लेकिन maybe it's also important in parallel to do the reality check। may well there's a saying in Sindhi कि हम एक चीज से दूसरी, I mean I can't exactly recall, but like of course we have to understand कि जो मेरी skills हैं उसी के basis पे, जो मेरी काबिलियत है उसी के basis पे मुझे जो है opportunity मिलेगी। On that note, there are so many other scholarships from HEC itself, जो कि इतनी ज़्यादा common नहीं है, जिनमें से for example Moroccan scholarship है, या फिर Hungarian तो well it's common, but या फिर Azerbaijan की scholarship की। The reason these scholarships are not common कि शायद इनमें जो है आपको language सीखनी पड़ती है, या फिर partial scholarships होती हैं। लेकिन if you think कि considering current scenario in Pakistan, you can like still, if that's a good deal, maybe you want to go for it. And at the end, maybe I would put a high emphasis on there's nothing that you cannot do or you cannot achieve. There's when there's a will, there's always a way. I mean, I promise आपका GPA matter नहीं करता। Where I'm sitting and from my lens, आपका ना GPA matter करता है ना आपका job experience, लेकिन as long as you have this passion inside you कि मुझे करना है तो आप कर पाओगे। Like you just need this X factor in you to achieve certain things. Well, there's a couple of other examples of young professional programs, which is something really similar to civil services, but on an international level. As we already run out of time, I won't go in depth of it, but you can watch this video on our channel. Then if you are already into an area of related to green jobs, environment and sustainability, then the future is going to be really bright for you. I'll quickly close with the final remarks on like when you want something, all universe conspires in helping you to achieve it. And then once you're on the journey, what you really want to do, I guarantee that मंजिल से तो खैर ज़्यादा ही बेहतर लगते हैं रास्ते। I'll close it here, and I'll request you all to maybe put in comments कि आपको future में किस topic पे you want to hear about. And if we run out of time from questions as well, you can put your questions in comments on the YouTube, and we will be posting it by tonight. That's all from my side, Mohsen. Okay, thank you, Lala, for such a sound conversation. This wasn't just another lecture. This felt more like conversational, like you were the only person speaking. But it was really good to see so many people in the chat box, especially when there were like a couple of questions, there were a couple of comments. Some people agreed, some people disagreed, which really shows that people they connect. If I was to summarize the chat, it started where you talked about whether it has to be uh, so from the Sandeep Bhaiyawala show, what I remember is like, and if I'm not wrong, that this is also a quote, failure का कोई नहीं होता, like, or like success के बहुत सारे बाप होते हैं, like it goes like that. And though some people
mentioned that they respectfully disagree to that. It can be a dream for family, and even you can own the family owns the failure as well. Some people did comment that. Some people said that Kudrat and Naseeb, which I would say I agree, but again, there are different reactions, and some people did not choose to comment on that. So you can take that for whatever that is. And also, some people said so it's not that you dream something, it's just that you do something, and eventually the journey becomes the dream. And that also connects with how you concluded it, with the line I say, "Manzil se behtar lagne lage raaste." So it's not what you dream, it's not the conclusion that you wanna be, it's just the roads become the dreams. And then conversation went on. Then you asked what is holding you back. Most common answers were fear of failure, fear of lack of proper guidance. Sometimes family is holding you back. Sometimes financial constraints, peer pressure, confusion, and there is human urge for constant comparison, and then results and overthinking can hold you back. And then we actually went on talking about uh, how to you drive it, and like whether you should take a break or not, whether you should, let's just going to do this, I want to do this, I want to do this. There were comments on that. And then like there's a comment, yeah, people abroad are. Are there any questions, Mohsen? Or maybe I can go through Well, the these are the questions. comments. So people did disagree, and then at the end, people did tell about their journey as you asked. Yep. So can I'll come maybe I'll out. go through the chat and then quickly comment on. Okay, sure. Yeah, so one of the comment is that life is supposed to be lived. Well, and then I'm so glad that people actually disagree as well. At me, it at least means, as you said, that it was engaging. And yeah, well, like you're very welcome to disagree. Like of course, as I said, I know only what I know, and like I have only been through certain journeys and certain paths, and like that's what I think. And if it helps you, or it may certainly not. Yes, I agree with life is supposed to be lived, but then it depends upon everyone's own thoughts and like how do they believe that what should they leave behind. So just it can be a difference of thought as well. So it's okay. Like if somebody has still any questions with respect to the, like you can put in the chat or maybe leave in the comments in the YouTube video later on. I did biomedical. Okay, that's you. Okay. I am trying to go through the chat. So meanwhile, if you have a question, you feel free to unmute yourself and ask a question, or Yeah. drop it in the chat. And then there is a comment on SOP and motivation letter. I think we have already done such a session, so maybe you can go through the previous videos. Yeah, if anybody has any specific questions to the session, then welcome, or else we can close. I guess there are no specific questions. So again, just to clarify, there you don't need to ask questions regarding something very specific. You can, Yeah. and like your questions right now can be philosophical, since the session went a bit on that side as well. So even if you have like confusion in your mind regarding you should go for scholarship or job, like even if you want to comment on that, or like you think you sharing something would be useful for others, feel free to. Mm-hmm. I guess no. So you can Excuse me, ma'am. okay. Yes, wait, please. अस्सलाम वालेकुम. Walaikum So मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने जो मतलब अपनी फील्ड चूज की है वो पहले तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था उसमें, और कुछ प्रेशर की वजह से फिर वो और कुछ मजबूरियां थी तो उसकी वजह से चूज कर ली, तो फिर उसमें इंटरेस्ट थोड़ा आता गया. लेकिन अभी मैंने जैसे बैचलर कर दी है और मुझे मास्टर्स करनी है, तो जैसे मैम लाला ने बताया कि उन्होंने भी बैचलर्स इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से की है, तो मुझे जो है मास्टर्स करनी है उसका मुझे सही से पता नहीं चल रहा है. मतलब मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि किस तरफ जाऊँ. मतलब मास्टर्स करनी है इसी फील्ड के किसी मतलब सब फील्ड्स होती हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज है या सेफ्टी है या कुछ और.
तो वो मैं सही से डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या आप इसमें कोई हेल्प कर सकती हैं, मतलब Mhm. कि मैं सही Um, फील्ड चूज कर पाऊँ? yep. Sunil, again, the whole point यही था कि maybe you just आप अपने आप को सिर्फ थोड़ा सा टाइम दें to think about all the things जो कि हमने पिछले घंटे में डिस्कस की, and then आप पहले ये डिसाइड कर लें कि आपको कहाँ पे करनी है शायद, या फिर लाइक कहाँ पे करनी है और कब करनी है। अगर आपको फॉरेन करनी है और पाकिस्तान से ही करनी है, देन लाइक आप प्रोग्राम वाइज चूज करोगे ना, क्योंकि पाकिस्तान में बैठ के शायद हमारे पास इतने ऑप्शंस नहीं होते टू मेक अ डिसीजन कि लाइक इफ आई वांट टू डू in climate change of sports or whatever, because I know I'm talking rubbish, but पाकिस्तान में आपके पास limited options होंगे। लेकिन अगर आप बाहर जाने के लिए टाइम, मनी, एनर्जी और पेशेंस अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको टाइम से भी कोई कंसर्न नहीं है, then you can think of, then you have a broader options to decide from। पाकिस्तान से करना है तो maybe water center is one of that, but like मैं नाम नहीं लेना चाह रही प्रोग्राम्स का, क्योंकि I don't want to drive your career journey। आप अपना फैसला खुद दें, लेकिन just based on step by step कि कब करना है, क्या करना है और कहाँ करना है। I hope इस तरीके से आप अपना फैसला ले पाएंगे। एक्चुअली मैम एक बार मतलब यू ग्रेड स्कॉलरशिप पे मैं गया हुआ हूँ, तो मैं ज़्यादा इंस्पायर हूँ कि मैं मास्टर्स जो है जो वो बाहर ही करूँ। तो उस हिसाब से मैं 2 बार जीआरई भी दे चुका हूँ, लेकिन मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं आया। तो उस हिसाब से फुल ब्राइट स्कॉलरशिप आपको पता है कितनी कॉम्पिटिटिव होती है, तो उसमें सुनील, सिलेक्शन नहीं हो पाया। हमने उन सब चीजों के बारे में ऑलरेडी बात की कि अब कोई जरूरत नहीं है ना आप ज्यादा कॉम्पिटिटिव चीजों में जाएं, एंड लाइक फॉर फर्दर guidance, maybe I can talk to you more in YouTube comments. We have one more hand raised from Mohammed Aslam, and maybe we want to take this question as well. Assalamualaikum, ma'am. Walaikum salam. Currently, I am studying electrical engineering final year, and as you have said that जो है अगर आपको पाकिस्तान में जॉब मिल जाती है तो आप जो है किसी मास्टर का बाहर वगैरह ना सोचें। तो मेरा गोल यही है कि मैं पहले पाकिस्तान में कुछ जॉब करूं, उसके बाद जो मैं अब्रॉड जो कर जाकर मास्टर करूं और उधर ही मतलब जो इंडस्ट्रीज वगैरह में जॉब करूं। तो क्या यह बेटर ऑप्शन नहीं है कि बंदा यहाँ से एक्सपीरियंस लेकर फिर मास्टर के लिए अप्लाई करे, या फिर यहीं पर जॉब करता रहे? ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, और आपने अगर अपने लिए ये बेहतर समझा है तो ये बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन आई थिंक समवेयर बिटवीन द लाइंस आपका क्वेश्चन ये था कि आप भी शायद बाकी लोगों की तरह जस्ट इनरोल होना चाहते हो मास्टर्स में। अगर आपका सवाल वो था तो आई वुड सजेस्ट कि वो आप ना करें। आप अपनी क्योंकि आप इस वक्त एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, तो आप उस पर शायद अपना ज़्यादा अटेंशन और फोकस दें, एंड देन वंस आप सफिशिएंटली आप समझते हो कि मेरे पास एक्सपीरियंस आ गया है, एंड देन यू वांट टू गो अब्रॉड फॉर जॉब्स और हायर एजुकेशन व्हाटएवर, आप कर सकते हो। मीनवाइल लाइक if you want to like transit between the fields and all, तो मास्टर्स जरूरी नहीं है, आप बाकी रिसोर्सेज से भी सीख सकते हैं, स्किल ग्रूमिंग कर सकते हैं अपनी। थैंक यू मैम। निशा will take your question. अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रही हूँ, एंड मेरे कुछ टीचर्स मुझे ये सजेस्ट कर रहे हैं कि बस अब स्कॉलरशिप की तरफ ही फोकस रखो अपना फॉरेन मास्टर्स के लिए, और कुछ मुझे ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप बैकअप के लिए पाकिस्तान में भी मास्टर्स में एडमिशन ले लें। एंड मैम मैं अब कंफ्यूज हो रही हूँ, आपकी क्या सजेशन होगी मेरे लिए? मेरी ये सजेशन होगी कि बैकअप वाला ऑप्शन जो है ये शायद आज से 3-4 साल पहले अगर मैं भी आपकी जगह पे बैठी होती ना, तो मैं भी यही कह रही होती और यही सुन रही होती, और ये सुनने में शायद मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा होता कि बैकअप में मैं ये कर लेती हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने अपने बैकअप ऑप्शंस प्लान बी सी रखे भी थे और किए भी थे, आई गॉट इनटू दोस। लेकिन वो उन सब सिचुएशन से निकलने के बाद अब मैं जहाँ पे बैठी हूँ, keeping a backup option like the way it is sounding, it's not right। क्योंकि जब तक आप किसी चीज के साथ 100% नहीं हो, 100% सच्चे नहीं हो,
और आप वो genuinely नहीं करना चाहते तो शायद आपकी जगह पे कोई और बेहतर कैंडिडेट आ सकता है। आई नो आप एडमिशन लोगे तो किसी और की एडमिशन मर नहीं जाएगी, लेकिन still you should not be deceiving yourself and you should give your 100% to only the things that you want to do. अगेन बैकअप ऑप्शन अब हम शायद इसलिए रखते हैं ना, हम समझते हैं कि हमारी उम्र निकल रही है, टाइम निकल रहा है, लेकिन बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग, माय ओपिनियन, ये सब सिर्फ मिथ्स हैं। एक्चुअल में टाइम और ये सब नहीं होता। एज लाइक वी हैड वन कमेंट दैट लाइफ इज सपोज्ड टू बी लिव्ड। जरूरी नहीं है कि हम अपना 24 घंटों में से 20 घंटे सिर्फ सीखने सिखाने में लगा दें, और भी बहुत कुछ है करने को। I hope it answers your question. We'll next take next question from Mohammed Mehman. Anisha, maybe you can put your query in the chat now. Is Mohammed Mehman you, Mohsen, or somebody else? No, that's not. Madam, what do you think about commerce as a field? About Should I what? take admission in commerce? And how to convince your parents about commerce? To convince your parents about any field, जो भी आप करना चाहते हो, you have to work upon their psychology. I mean, you can think about, like, because I don't know your parents, I may not know everyone's parents. हर किसी के अपना तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें अगर किसी जगह पे जाने के लिए घर वालों से छुट्टी चाहिए होती है, तो कुछ बच्चे जिद करने में खाना नहीं खाते 2 दिन, कुछ घर नहीं आते, कुछ लोगों का अपना तरीका होता है। If you think you really want to do commerce and that's good for you, I think you should decide on your own कि किस तरीके से पेरेंट्स को मनवाना है। लेकिन रही बात कि कॉमर्स करनी चाहिए या नहीं, ये आपका अपना फैसला है। इसके ऊपर शायद आई एम नॉट एक्सपर्ट इनफ टू कमेंट। Hi, Motion. I think we should close now. That's all for the questions. So if you have any concluding remarks, and also there's one question that we like to ask our guests. So since you talked about journeys, you talked about your journey, you come from Pakistan, you're living abroad now, you've seen several countries. Along with your concluding remarks, if you could comment, where do you see Pakistan and especially the education spectrum in Pakistan in 30 years, let's say maybe in 2054, where do you see it? And with that, we would conclude. Yeah. I should have been told in advance. Well, I can begin with my journey, and I can guarantee that wherever I am today, I am a proud Pakistani. Like, अगर मैं पाकिस्तानी ना होती तो शायद जो भी मेरी जर्नी रही है, which has been pretty much dynamic and pretty much engaging and exciting, मेरी वो जर्नी उस तरीके से ना होती। And like, even I'm not just saying out of words कि like मैं कोई patriotic तरीके से नहीं बता रही, लेकिन जो programs, जो scholarships और जो fundings, and like to be counted in number, 10 से 12 किस्म के different fundings और scholarships की मैं बात कर रही हूँ। They were all based on कि मैं पाकिस्तानी थी और मुझे पाकिस्तानी acknowledge किया गया था, इसी के basis पे मिली थी, starting from global U grade until like now maybe, क्योंकि मैं एक developing country, जो भी पाकिस्तान की situation from 2012 से लेकर अब तक जो भी है, और like, and then the second edge I had was being a woman. I'm a proud woman engineer, I would say, क्योंकि मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकती कि मुझे जो अपॉर्चुनिटीज मिली उनमें से काफ़ी में से मेरी एलिजिबिलिटी में being a woman was giving me added on benefit. Where do I see Pakistan in next 30 years? Pakistan go now, I look at from the youth of Pakistan and its perspective. There's a whole research and report on youth of Pakistan by Dr. Adil Najam and the panel. They see the country के किस तरीके से इसका जो
नौजवान है आगे चल के, लाइक यू मेंशन 30 years और 50 years, इस मुल्क का नौजवान अपने के कंधों के ऊपर इस मुल्क की जिम्मेदारी आएगी. सो आई सी कि हम सब जो हैं, मैं कहीं भी बैठी हूँ लेकिन आई एम अ प्राउड सिंधी एंड आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी. कल को मैंने पाकिस्तानी वापस जाना है एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सर्व इट. एंड ये बोझ तो है मेरी कंधों के ऊपर. अब ये मेरा फैसला है कि मैं उसको एक्नॉलेज करती हूँ इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को या नहीं. तो हमारे जो यूथ है, दे आर डूइंग अमेजिंग जॉब. फॉर एग्जांपल आज हम इस सेशन में एट द बिगनिंग वी वर अराउंड 19 पर पीपल एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. इट मीन्स कि हम समझते हैं कि हम लोगों को पर्सनली भी कुछ करने की जरूरत है, प्रोफेशनली ग्रोथ की भी जरूरत है. एंड अल्टीमेटली दैट्स व्हाट आई वाज मेंशनिंग कि जो भी हम कर रहे हैं, पैसा खाली मकसद नहीं है, कोई अल्टीमेट गोल भी होना चाहिए. तो हम सब वो रिस्पेक्टिवली अपनी अपनी फील्ड्स में, आप फॉर एग्जांपल मेडिसिन में, मेडिकल में कर रहे हो, मैं इंजीनियरिंग में कर रही हूँ, हम सीख रहे हैं, हम ग्रूमिंग कर रहे हैं. देन इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम क्या फैसला लेते हैं कि हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कबूल करके अपने मुल्क वापस जाके उसको सर्व करते हैं, या यहाँ पे बैठ के उसको सर्व कर सकते हैं, या फिर हम वी जस्ट लिव ऑन आवर ओन. सो दैट्स हाउ आई सी पाकिस्तान. Yeah, thank you so much for that. With that, I would say we can end the session. I would say if anybody wants to leave, feel free to leave. Meanwhile, I have shared our YouTube channel's a link in the chat box if you want to subscribe or if you want to look forward to other videos. Feel free to follow from there. Yeah, that's it. Goodbye. Allah Hafiz. Take care. Bye.